essay on burning topic GST. Okay, everyone knows goods and services tax. Okay, so let's start. And this is our new series, essay on burning topics. Every day I'm going to cover this topic, one topic, and cover every point of that topic. Okay, so that we can learn from it. Okay, so today's topic is GST. Okay, goods and services tax. So let's move. Our first page is essay on GST. Okay, so let's start. Much awaited goods and services tax GST will finally has become a reality on 30th June midnight. It would radically change a way manufacturer, service provider, trader, and eventually the consumer pay taxes to the exchequer, both at the state and central level, through a single levy, sub-assuming a plethora of indirect taxes and making India a unified market. Okay, so in this paragraph it is said that much awaited. Okay, 17 year of wait. Awaited means waited for. Okay, goods and services tax GST will finally has become a reality on 30th June midnight. Everyone knows in Sansad Bhavan there was a program. Okay, and UPA boycotted it. Okay, but every other party except some, what to say, you already know. ठीक है, so 30 जून को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पास हुए थे हमारे, मतलब लागू हो गया था ऑल इंडिया. ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या करेगा. ये पूरा चेंज कर देगा. जो टैक्सेस के रिफॉर्म्स हैं उसमें सबसे बड़ा ये रिफॉर्म है. और ये मैन्युफैक्चरर जो लोग बनाते हैं उनका, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर एंड इवेंचुअली द कंज्यूमर के पे टैक्सेस टू द एक्सचेकर बोथ एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल को ये चेंज करने वाला है बिल्कुल. Okay, what is GST? What is goods and services tax? GST is unified taxation system which would end multiple taxation across the state and create a level playing field for business throughout the country. Much like the developed nations, it is a multi-stage destination-based tax which will be collected at every stage, starting from procuring the raw material and selling the final product. Okay, it is a first word, unified, एक tax. Okay, one tax, one India, one market. No, yeah, one tax, one market. Okay, एक देश एक बाजार, यूनिफाइड टैक्स है. ठीक है, ये मल्टीपल टैक्सेशन अक्रॉस, मतलब जितने भी मल्टीपल टैक्स थे कितने थे, 17 हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस लगते थे, पूरे मिला के 40. इन सबको खत्म करने वाला है और ये एक अकेला टैक्स होगा. ठीक है, और ये जो मतलब हर मल्टीपल स्टेजेस में लगेगा, विच बी कलेक्टेड एट एवरी स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्यूरिंग द रॉ मटेरियल टू सेलिंग द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, आगे देखते हैं. द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट द प्रीवियस स्टेजेस विल बी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सप्लाई. जो आपने पहले टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपको बाद की सप्लाई में आपको मिलेगा. Being destination or a consumption based, the GST will also end multiple taxes levied by center and state governments like central excise service tax, VAT, central sales tax, octroi, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स. ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम थे जिनको ये खत्म करने वाला है, एक्सेट्रा. विच विल लोअर द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन द कंज्यूमर एंड विल बेनिफिट द इंडस्ट्री थ्रू बेटर कैश फ्लोज एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. करेंटली 17 states and center levies are being applied on goods as they move from one state to the other. Okay, क्या क्या इसके benefits हैं? Different estimates peg मतलब होता है increase the net advantage of the good gross domestic
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अप टू 2 परसेंटेज पॉइंट। ओके, सब लोग बोल रहा है, ऐसा एस्टिमेट्स लगाया जा रहा है कि इससे हमारी जीडीपी 2% इंक्रीज होने वाली है। ओके, द जीएसटी regime is also expected to result in better tax compliance, thereby increasing its revenue and narrowing the budget deficit. Okay, all the imported goods will be charged. ऑल द इम्पोर्टेड गुड्स, जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन पर कौन सा चार्ज लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST, विच इज इक्विवेलेंट टू द सेंट्रल GST एंड द स्टेट GST. दिस विल ब्रिंग इक्वालिटी विथ टैक्सेशन ऑन लोकल प्रोडक्ट्स. Okay, mainly there will be 3 types of taxes under the GST regime. What? Central GST, state GST and IGST. Central goods and services tax, states goods and services tax, integrated goods and services tax. Tax levied by the center on intra-state, in the state, intra-state मतलब in the state, supply of goods or services would be called the CGST, and that to be levied by the states and union territories on intra-state supply would be called as SGST. Okay, respectively. The IGST would be levied and collected by the center on interstate, on 2 different states, supply of goods and services. 4 supplementary legislation approving 3 taxes, namely the central GST bill, the integrated GST bill and the GST compensation to states, okay, bill and the union territory GST bill were passed by the Lok Sabha in May this year, making the realization of 1st July 2017 deadline a reality. Means जो 4 laws, जो 4 legislations पास हुए हैं, कौन कौन से? The central GST bill, integrated GST bill, GST compensation to state, कि अगर स्टेट को 5 साल में कोई भी नुकसान होता है तो सेंट्रल उसकी भरपाई करेगा, and the union territory GST bill was passed in May and making the realization, okay, on 1st July 2017 deadline a reality. All the matters related to the GST are dealt upon by the GST Council, which was headed by the Union Finance Minister, while all the state ministers are its member. State Finance Minister are its members. The GST Council also has a provision to adjudicate disputes arising out of its recommendation or implementation thereof. Okay. मतलब काउंसिल के मेंबर कौन कौन थे? एक तो उसके हेड थे जो हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, और उसके अलावा जो उसके मेंबर्स थे सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, आगे जो भी जीएसटी में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन या फिर कुछ में भी अगर देखा जाता है कि चीज़ महंगी हो रही है, इससे लोग को मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आगे भी मतलब उस जीएसटी काउंसिल काम करती रहेगी. ओके, टैक्स रेट्स देख लेते हैं. The GST Council has fixed 4 broad tax slabs under the new GST system: 5%, 12%, 18%, and 28%. On top of the highest slab, there is a cess on luxury and the demerit goods to compensate the states for revenue loss in the first 5 years. Okay, of GST implementation. मैंने पहले ही बताया कि 4 टैक्स स्लैब है, 5, 12, 18 और 28. ठीक है, हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है उसमें लग्जरी को रखा गया है. उसके अलावा उस पर सेस भी लगाए गए हैं ताकि जो स्टेट को 5 साल में कोई भी लॉस होता है तो देना है तो उस सेस से दिया जा सके. मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन लिस्टेड अंडर द 4 स्लैब, बट अ फ्यू लाइक गुड्स, gold and rough diamond have exclusive tax rates. Okay, also some items have been exempted, उनको मतलब नहीं दिया गया है इसमें from taxation. The essential items have been kept in the lowest tax bracket, यहाँ पे होना चाहिए, bracket मैंने लिखा है, whereas luxury goods and tobacco products will invite higher tax. Okay, 17-year long wait. Many countries in the world switched to a unified taxation system very early. France was the first country in 1954. Okay, 1954 में फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने अपने यहाँ GST लगाया था. And many other followed, some by implementing GST and other by using a different form of VAT. In India, the discussion started in the form of VAT
Okay, in the form of that, in India the discussion started in year 2000. Okay, in NDA government by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Finally, after 17 years of consensus building, 101 मतलब 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पास हुआ है पार्लियामेंट इन 2016, उससे हमारा GST को लाया गया है. The state has apprehension of reduction in their revenue and their desire to keep some lucrative goods out of the GST basket like alcohol. याद रखिए GST basket से बाहर हैं कौन कौन से? Alcohol, petroleum and real estate and among others. Okay, ठीक है. Impact on consumers क्या क्या है? From agarbattis, incense sticks to luxury cars, all the goods will be taxed under different slabs. Movie ticket costing less than, अगर 100 रुपए से कम की मूवी टिकट है तो उस पर टैक्स रेट रखा गया है 18%, लेकिन अगर 100 रुपए से ज़्यादा की है तो उस पर 28% का टैक्स. ठीक है. Tobacco product have been kept under a higher tax bracket. Industries such as textile and gems and jewelry are subject to a GST rate of 5%. Okay, याद रखिए कौन कौन से? Gem, jewelry. Okay, ठीक है. Higher tax rate but tobacco एकदम रखना जरूरी था. ठीक है. The tobacco the government has shown its strong determination and stuck to implementing the GST with effect from 1st July 2017. The road ahead would require a lot of resolve by the implementing agencies like the Goods and Services Network. Okay, so this is Goods and Services Network, states and the industry to sail through initial hiccups and successfully steer the ship of the economy. The government needs to show the same determination and courage. A bold initiative like GST taken for the welfare of the country must lead to grand success. Okay, so this is all from me. Thank you.